So friends, these are all the things which are needed to make a perfect pizza. So as you can see, everything which is being needed for making a pizza is available over here, and you can easily see everything. There is a mole butter, there is a tomato ketchup, there is a pizza sauce, and these are the chili flakes, and this is the oregano, and this is a paneer, and this is a mole cheese, and below which this is a pizza base, and this is my IFB microwave oven. So firstly we will make the temperature of the microwave oven up to 200 degrees Celsius. And after that we will start for 2 minutes at least. We will start that. So now I will rub the butter at the top of the pizza base. As you can see, proper buttering is being done. Now I will put this. Now we will put the pizza base inside the oven so that it get heated. Now we close the microwave oven and set it around 200 degrees Celsius. Around 2 minutes. Convection. Now I think I should close the oven. It is being properly heated. जैसा कि आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा का बेस पूरी तरीके से बेक हो चुका है। अब हम इसकी दूसरी तरफ बटर लगाएंगे और उसको भी बेक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं दूसरी तरफ पिज़्ज़ा का बेस पर बटर लगा रहे हैं। अब हम इसके ऊपर बटरिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर पास्ता या पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। चालू कर दिए। अब हम पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर डालेंगे। आप अपने हिसाब से पिज़्ज़ा का सॉस डाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर टमाटो केचप डालेंगे। इसको भी आप अपने हिसाब से
डाल सकते हैं। हम पिज़्ज़ा सॉस को प्रॉपरली इसके ऊपर देख सकते हैं आप, पिज़्ज़ा सॉस पूरी तरीके से लग चुका है। अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। आप अपने हिसाब से चीज़ डाल सकते हैं। और हम सब्जियाँ डालेंगे। अब हम इसके ऊपर पनीर के पीसेस रखेंगे। अब हम इसके ऊपर और चीज़ डालेंगे। अब हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप अपने हिसाब से चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। और अब हम ऑर्गेनो डालेंगे। अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक ओवन के अंदर रखेंगे। पहले इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक सेट कर दीजिए। उसके बाद इसको 5 मिनट तक और फिर स्टार्ट कर दीजिए।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है।